Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I Nisar Ahmad, teacher BHS KONAGABRA. Date 1st of September 2020. Class 10th. Subject Science. सब ग्रुप जो है साइंस का वो बायोलॉजी है। इससे जो टॉपिक जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो डियर स्टूडेंट्स, कल वाले और तरसों वाले इस टॉपिक में हमने फर्टिलाइजेशंस और पोलिनेशंस को पढ़ा। आज हम इन्हीं का डिफरेंशिएशंस हम कर रहे हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशंस डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, कि ये जो पोलिनेशन प्रोसेस है ये कैसे मुख्तलिफ है फर्टिलाइजेशन से। डियर स्टूडेंट्स, पोलिनेशंस की हमने डिफिनीशन लिखी थी, द ट्रांसफर्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशंस की डिफिनीशन लिखी थी, द फ्यूजन्स ऑफ टू गमीट्स मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशंस पौधे में होती है, फर्टिलाइजेशंस एनिमल्स में होती है। The transfers of pollens from anther to stigma of the same flowers or to the stigma of another flowers of the same flowers is called self-fertilization. Fusions of male and female gametes, that is sex cells, produced by the same individual is called self-fertilization. It occurs in bisexual organism. Next, third part है, if the pollen grains are transferred from anthers of one flower to the stigma of the flower of other plant of the same species, the pollinations is called cross pollinations or allogamy. Fertilizations में क्या है, the fusions of male and female gametes produced by different individuals of the same species is called cross fertilization. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एक और क्वेश्चन में रखता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ seminal vesicles and prostate gland? Seminal vesicles are the two muscular glandular sacs. The secretions of seminal vesicles make the sperms active. These vesicles contribute about 60% of total volumes of male sperm. Prostate gland जो है, the prostate gland is a solid chestnut-shaped organ situated just under the bladder and in front of the rectum. It surrounds the first part of the urethra. Both glands add their secretion so that the sperms are now in fluids, which makes their transportations easier, and these fluids also provide nutrition. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखता हूँ, व्हाट आर द चेंजेस सीन्स इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी? यानी वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं
जो लड़कियों में पुबर्टी के दौरान नमदार होती हैं। इम्पॉर्टेंस है ये भी। पुबर्टी इज द प्रोसेस of human development during which a person changes from a child into adult। यानी ये वो अमल है जिस अमल से एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलपमेंट्स होती है और वो बस वो चाइल्ड से किस की तरफ जाता है, अडल्ट की तरफ जाता है, जवानी, यानी वो उसका बचपना ख़त्म हो जाता है और वो अडल्ट एज में दाखिल हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल मैचरिंग्स यूजली occurs during the teenage or adolescence। अब ये जो प्रोसेस जो है ये इसके फिज़िकल में, इसके इमोशनल मैचरिंग्स यूजली आकर कहाँ कब होती है, टीन एज में और एडोलसेंस। डियर स्टूडेंट्स, टीन एज 12 से शुरू होती है ये 19 तक, इसीलिए इसको टीन एज कहा जाता है। टीन एज या एडोलसेंस, बलूगत। Years but may start as early as age 9 or 10 in females। और फीमेल्स में ये 9 या 10 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। इट इज़ जनरली completed by the age 16 or 17 in females। और फीमेल्स में ये 16 से 17 साल में पूरी हो जाती है। It onset is triggered by the secretion of hormones FSH। यानी ये भी किसकी मदद से होती है, हार्मोन की मदद से होती है, जिस हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन भी हार्मोन्स है, नाम है, जो ओवरी से सिक्रीट होता है। द चेंजेस विच टेक प्लेस विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इन फीमेल्स आर। वो तब्दीलियाँ जो फीमेल्स में पुबर्टी में होती हैं वो कौन सी हैं, इनको याद रखना है। द फीमेल्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन्स कॉज ब्रेस्ट डेवलपमेंट। पहला, द फीमेल हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन कॉज ब्रेस्ट डेवलपमेंट। सेकंड, an increased rate of growth। Third, a higher percentage of body fat, particularly in thigh, shoulder, buttock and face to give typical feminine contour। The onset of menstruations, generally menstruations begins 2 to 4 years after the onset of puberty। The growth of pubic, axillary and body hairs develop pimples। The skins of the nipple at the tip of the breast darken। Skin may become oily। Broadenings of pelvis, these are the main changes that occur in girls at the time of puberty। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर एक बार। The female hormones called estrogens cause breast development, an increased rate of growth, a higher percentage of body fat, particularly in thigh बेटोरान को कहते हैं, शोल्डर कंधों को कहते हैं, बटक्स एंड फेस टू गिव typicals feminine contour। The onsets of menstruation, generally menstruation began 2 to 4 years after the onset of puberty। The growth of pubic, axillary and body hairs develops pimples। The skin of nipple at the tip of the breast darken। Skin may become oily। Broadening of pelvis, these are the main changes that occur in girls at the time of puberty। Dear students, I hope
आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।